ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଟିଜିଟି ଏଲ୍ଟିଆର୍ ଓଏସ୍ଟିଟି ଓଟିଇଟି ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆଉ କ'ଣଟେ ପିଲେ ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲ୍ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ର ପେଡ଼ାଗୋଜି କ୍ଲାସ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାଙ୍କର ଆମର କ'ଣଲେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରରେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଆସୁଛି ସବୁର ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ଆଜିଠୁ ଆମର ଯେଉଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2024ରେ ପିଲେ ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ତାର ଆଜିଠୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମର ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର କମନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଟିଚିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରିଜନିଂ ଆଉ ଆମର କ'ଣରେ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଆମର ଇଂଲିଶ। ଆଜି ମୁଁ ଟିଚିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ପୁରା ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ବୁଝେଇବି। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କର। ଯେତେ ପିଲା ଆସିକି ଜଏନ୍ ହେବେ ଯେତେ ପିଲା କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହବରେ ସେତେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ପୁରା ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଲା ଯାଏଁ ଆଜିଠୁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ ବୋଥ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ମୁଁ ସବୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଇବି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ସେଠି ମୁଁ ନୋଟ୍ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ PDF ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ତୁମକୁ ସେୟାର କରିଦେବି ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ କ'ଣ ହେବ 2024ରେ ଯେଉଁ ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେବ ବହୁତ ତୁମକୁ ପିଲା କ'ଣ କରିବ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମର କ'ଣ ଟିଚିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 1 ରହିବ। ଏମିତି ମୁଁ ଯେତେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ 1 2 3 4 କରିକି ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନେଇଦେବି ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ 2024 ସେଇଠି ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଥିଓରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି। ଆସନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ବୁଝିବାର ପିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଗେ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କ'ଣ, ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆମେ କାହିଁକି ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଏଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆମର ଯେତେବେଳେ ବିଏଡ୍ କୋର୍ସ ସରିବ ଆମେ ଟିଚର୍ ହେବା ଏଇ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ଟା ଆମକୁ କେତେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ପୁରା ଶୁଣ ଆମର ନୋଟ୍ ରହିବ ପିଲେ ଇଂଲିଶରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝେଇବି ଯେଉଁ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିବ ଓଡ଼ିଆରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ MCQ କରାଇବି ଦେଖିବେ ଇଂଲିଶ MCQ ଆମେ ଇଂଲିଶ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ପଢ଼ିଦେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାନଟା ବୁଝିଯିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ଇଂଲିଶର କାହିଁକିନା ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ସବୁ ଇଂଲିଶରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଆସୁନାହିଁ ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ ଆମକୁ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଂଲିଶରେ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଯାହା ସବୁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ସବୁ ନୋଟ୍ କରି ଦେବ। ଆସ ଦେଖ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆଗେ ବୁଝିବା ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ର କ'ଣ। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟସ୍ are measure of potential ability their foreshadow success on related tasks some future time। କ'ଣ କହିଲା ଏ ଯେଉଁ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟଟା ତୁମର ନିଆଯାଉଛି ବା ଯେଉଁ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଯେଉଁ ତୁମର 10 ମାର୍କ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ପାଇଁରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଜଣେ ଟିଚର୍ ହେବ ତୁମର କ'ଣ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଆବିଲିଟିଜ୍ କେତେ ତୁମ କେତେ ଦକ୍ଷତା ତୁମେ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିଛ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ତୁମେ ପିଲାଟାକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରୁଛ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ମାନେ କ'ଣରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଟିଚର୍ ବନିବ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଚିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ତୁମର ଯେଉଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଆବିଲିଟି ଥିବ ତୁମର ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିବାର କାପାସିଟି ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ କ'ଣରେ ପିଲାଙ୍କର କେତେ ଲେବୁଲ୍ରେ ଜାଣିଛି କେତେ ମାଇଣ୍ଡ ପିଲାର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଜାଣିବା ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ପିଲା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପିଲା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦ ପର୍ପୋଜ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଫୋକସ୍ ଅଫେନ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟାରୋଡ୍ to a single ability or small collection of related abilities which ensure that the candidates who want to enter the teaching profession and have required knowledge and skill। ଦେଖ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଟିଚିଂ ସ୍କିଲ୍ରେ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦରକାର ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ଆବିଲିଟି ଥିବା ଦରକାର ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ତାର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର ତାର ପ୍ରଫେସନ୍ ସେ ଯେହେତୁ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ରହିବ ଟିଚର୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବୁଝିବା ତାର ନିହାତି ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିବା ଇଟ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ବେସିକ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଟିଚର୍। ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଟିଚର୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖ ତୁମ କ୍ୟାରିୟରରେ ତୁମେ ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛ ମାନେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଲେ କ'ଣ ଯେ ଟିଚର୍ ହେବ। ଖାଲି ମାନେ ଏଣୁ ତେଣୁ ଜଣେ ଟିଚର୍ ହେଇଯିବା କିମ୍ବା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ରାକ୍ କରିଦେଇକି ଟିଚର୍ ହେଇଯିବା ସେଟା କୌଣସି କ'ଣ ମ୍ୟାଟର୍ ରଖେ ନାହିଁ। ତୁମେ ହୁଏତ କାଲି କ'ଣ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ଲିୟର୍ କରିକି ଟିଚର୍ ହେଇଯିବ ହେଲେ ଆମର ଟିଚର୍ ହେବାର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା କିମ୍ବା ତୁମକୁ ଜଣେ ଭଲ ଟିଚର୍ କେଉଁମାନେ କହିବେ
ତାହା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେତେ ଭଲ ତୁମର ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ କନସେପ୍ଟ ଥିବ, ଯେତେ ଭଲ ତୁମର ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ନଲେଜ୍ ଥିବ, ତୁମେ ସେତେ ବେଟର୍ ଟିଚର୍ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ରେ ବାହାରି ପାରିବ। ଦେଖ କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ମ୍ୟାଥ୍, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆଭରେଜ୍ ନଲେଜ୍ର ପିଲା ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ରେ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼େଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର୍ ତୁମର ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍, ତୁମର ନଲେଜ୍, ତୁମର କ'ଣରେ ସ୍କିଲ୍ ଯେତେ ବେଟର୍ ହେବ, ତୁମେ ସେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଟିଚର୍ ଭାବରେ ବାହାରି ପାରିବ। ଆଜି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଟିଚର୍ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣ ଦରକାର? କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତ ନିହାତି ଦରକାର, ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍, ମେନି ଅଦର କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଟିଚର୍। ତୁମେ ଯଦି ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଟିଚର୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆଜ୍ ଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଟିଚର୍ ତୁମକୁ ହେବା ପାଇଁ ତୁମର ନଲେଜ୍, ତୁମର ସ୍କିଲ୍, ତୁମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ତୁମର ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଦକ୍ଷତା, ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଦକ୍ଷତା ସବୁ କ'ଣ କରିବ ରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଟିଚର୍ ବନେଇ ପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ରେ? ଟିଚିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆମେ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା? ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର୍ ଆମର ଟିଚିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କ'ଣ ଦରକାର? କାରଣ ଆମର ଦେଖ, ଆଉ ତୁମେ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ, ତୁମେ OSSC ଅଣ୍ଡରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ, OSSC ଅଣ୍ଡରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ, UPSC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମର ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆସୁଛି କି? କେବଳ ଆମର କ'ଣ ପିଲାରେ B.Ed ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର OSTT, OTT, ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଅଲ୍ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣଲେ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବା ପେଡ଼ାଗୋଜି କୁହ ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡ଼ାଗୋଜି କୁହ, ସବୁ ସେମ୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଟିଚିଂ କ'ଣରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କ'ଣ? ଆସ ଦେଖିବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣରେ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବା ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଡେଫିନେସନ୍ ପିଲେ ପୁରା ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିକି ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରାଇବି, ଦେଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ MK ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଯେଉଁ ନେଲସନ୍ ମାଣ୍ଡେଲା, ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କର B.Ed ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ପଚାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କରାଇବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ଆମର ଥିଓରି MCQ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2014 ପାଖରୁ ପୁରା 2023 ଯାଏଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ସବୁ କରାଇଦେବି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ 3ଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି। B.Ed ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ 2024 ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଠିକି ଯାଇକି ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ କରିପାରିବ ଦେଖିପାରିବ। ଆସ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କ'ଣ କହିଛି ଆମର, ବାଇ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇ ମିନ୍ all-round drawing out the best in child and man body, mind and spirit. Literacy is not the end of education or even the beginning. आमे जो लिटरेट हो गले, आमे जो कौन साक्षर हो गले, यहीटा कौन एजुकेशन शेष नुह कि एजुकेशन आरंभ नुह। बुझिपार ना रे? एजुकेशन अर्थ हूँ कौन ऑलराउंड ड्रॉइंग आउट बेस्ट चाइल्ड। पिलाटा पाठ पढ़ी खाली नुहे जे तुम चाकरी करदेने तुम कह भल एजुकेशन पाइगल बोली। तुमर बिहेवियर, तुमर कौन चिंताधारा, तुमर एबिलिटी सबू कौन एजुकेशन लु ही जना पड़े। एटा किए कही रे? तुम पूरा एटा को खातार लिखिकी मन रखिब। बाय एजुकेशन आई मीन ऑलराउंड ड्रॉइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। लिटरेसी इज नॉट द एजुकेशन और इवेन द बिगिनिंग। किए कही रे? MK गांधी। एटा को निहाती पिले मन रखिब, बारंबार प्रीवियस ईयर एग्जाम एटा पचारि। तापर देख, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन यू यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एटा देखो आहरी बढ़िया कथा कहले, एजुकेशनटा सबुठू गोटे पावरफुल वेपन। देख रे भाई कौन कौच मु, तुम समस्ते देख शुण, सबू जिनस जड़े समस्त नहीं पार। तुम बापा माँ दी पुओ अछ कि दी झी अछ कि 3 पुओ अछ 3 झी अछ, तुमर जो जमी भाग हम तुम भाई तुम नहीं पारे, भौणी नहीं पारे, जहाँ तुम भाग बांट हम सबू कौन करें समस्ते समस्त तो नहीं पारे। हेले एजुकेशन एमती गोटे जिनस, नॉलेज एमती गोटे जिनस, से तुम कतरू कहीं नहीं पारे ना। से तुम जिते भल भाव में तुम क्रिएट कर तुम जान से तुमको ही बहुत हेल्प कर। से कथा कहते एजुकेशनटा गोटे एमती पावरफुल ओपन, से कौन कर वर्ल्ड को पूरा चेंज कर पार। ये दुईटा जाके खातार लिखिकी रख। तापर आस देखिए बुझा कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग जो आम कहते टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग रो अर्थ कौन, व्हाट इज टीचिंग। आम बर्तमान डेफिनेशन पचरा हम व्हाट इज टीचिंग कौन हो। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिलेटिव कॉन्सेप्ट लाइक इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन। देख तुम कौन इंट्रोडक्शन कुह, कंडीशनिंग कुह, ट्रेनिंग कुह, इंट्रोडक्शन कुह, ये सबू पिले अलग। टीचिंगटा हूँ कौन पिले अलग।
बुझीपार ना टीचिंग रो डेफिनेशन देखो कौन देइछि से टीचिंग इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एजुकेशन एजुकेशन रो गोटे इंस्ट्रूमेंट हला कौन रे टीचिंग एंड इज स्पेशल फंक्शन इज टू इम्पैक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल टीचिंग रो अर्थ होउछि कौन ले आमे गोटे जिंस को बुझीबा सेई जो जिंसटा बुझीबा ता ऊपर केते स्किल हमर हबो केते आमे ता ऊपर काम करि परिबा कोन टीचिंग रो अर्थ होउछि कोन अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव आमे जो टीचिंगटा आमर आसिला कौन पाई रे आमे जो लर्निंग करचंती तमे बर्तमान कौन करछ लर्निंग करछ मु बर्तमान कौन करछ पिले टीचिंग करची बुझिपारछ ना मु केमिति तुमको टीचिंग एटीट्यूड रे 10 रु 10 मार्क रखेबी सेही भलिया मु तुमको क्लास प्रोवाइड करिवि तुमको हेल्पफुल हबो तमे बुझी पारिबो तुमको कोन रे लर्निंगटा इफेक्टिव हब द लर्निंग प्रोसेस वुड गेट कम्प्लीटेड एज ए रिजल्ट ऑफ टीचिंग गोटे लर्निंग प्रोसेस टे केमिति पिले कंप्लीट हब रे तुम पाई जति मु बीएड एंट्रांस रो क्लास न करैबी जति मु गोटे क्लास करैके तापर आ पुनी 5 दिन पर गोटे क्लास करैबी कोन हब किछि लाभ हब कि तमरो हब नै द लर्निंग प्रोसेस वुड गेट कम्प्लीटेड एज ए रिजल्ट ऑफ टीचिंग मु तुमको जेते भलो भाबरे क्लास पर डे रे गोटे क्लास प्रोवाइड करबी तमे माने पढिबो तमे माने बुझिबो सेटा तुमको कोन करबी पिले बहुत हेल्प करिबो आ कोन गोटे रिजल्ट आसीबो तार तुम जतले बीड एंट्रांस देके बाहरिबो एग्जाम हल्लू देखिबो कि सर जहाँ पढ़ाई देले सब डायरेक्ट क्लास रु ही पढ़ी 10 रु 10 तुम करिकी आसीच बुझी पाइलो तापर देख सो टीचिंग एंड लर्निंग आर भेरी क्लोजली रिलेटेड निहाती पिला देख तमें जी मुझे पढ़ेबी तुम लर्नर मु टीचर मुझे पढ़ेबी तुम पढ़ो मुझे पढ़ेबी तुम से भलसे पढ़ो मुझे भलसे बुझेबी तुम से भलसे बुझब तुम मो सहित रिलेटेड हेल बुझल ना रे टीचिंग आ लर्निंग कौन बोथ इंटर रिलेटेड बस बुझल ना तापर देख मीनिंग ऑफ टीचिंग एटा तुम कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग बुझले एबे आस बुझे मीनिंग ऑफ टीचिंग टीचिंग रो माने कौन टीचिंग इज ए प्रोसेस इन व्हिच वन इंडिविजुअल टीच और इंस्ट्रक्शन अनदर इंडिविजुअल मु जने इंडिविजुअल तमे कौन जने इंडिविजुअल मु बर्तमान घरे बसिक तुमको पढ़ाऊँगी तुम तुम घर बसिक देखुच सी ता घर बसिक देखुच समस्ते अलग अलग जगह बसिक देखुच बुझिपार ना मु गोटे इंडिविजुअल तुमको पढ़ाऊँगी तुम भी गोटे इंडिविजुअल कौन कर पढ़ुच बुझिपाल टीचिंग इज कन्सिडर एज द एक्ट ऑफ इम्पैक्टिंग इंस्ट्रक्शंस टू द लर्नर्स इन द क्लासरूम सिचुएशन गोटे क्लासरूम सिचुएशन ले आमे जो टीचर जो इंस्ट्रक्शन दियंती जो पढ़ाती ता कौन कहते टीचिंग बोली कहती देख इट इज वाचिंग सिस्टमेटिकाली मुझे कथा तुम कहले पिले मु गोटे क्लास आज प्रोवाइड करी पुणी आबी पर डे बेसीस रे मु तुम जमी क्लास प्रोवाइड करी तुम पे सेमती रेस्पॉन्ड कर क्लास देख डुए कौन कहते देख रे समस्त जानिच जॉन डुए प्रोग्रेसिव एजुकेशन फादर सी कौन कहते considers is a manipulation of the situation where the learner will acquire skill and insight with his initiation सब बेले शुण इनिशिएशन अर्थ कौन ले पिला निजे स्टार्ट करूँ तुमको मु टॉपिक देइथिले आज टीचिंग एटीट्यूड क्लास स्टार्ट करी बोली तमें जति निजे घरे जाइकी नेट रे हो किंबा कोनोसी जगार हो टीचिंग एटीट्यूड माने हो जहाँ देखि तुमको कौन कर बहुत हेल्प करिवो तमें यदि निजे पाठ पढ़ार इच्छा थी पाठ पढ़ार आग्रह थी तुम निजे कौन भाई बहुत भल भाव पढ़ी पारिबो तापर देखा देख गोटे क्वेश्चन तुमको देती तुम निजे सल्व कर तुम छाड़ुची मत तुम कौन कह आंसर कमेंट रे जनइब व्हाट इज द एटा मु तुम क्वेश्चन बनई व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट आम जो टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट बनाऊँच तार मेन पर्पज कौन तार मेन उद्देश्य कौन टू मेजर पोटेंशियल एबिलिटीज दैट प्रेडिक्ट सक्सेस इन टीचिंग टू assess a candidate's knowledge and skill required for teaching to determine a candidate's qualification and soft skill of intelligence to narrow down the focus on a single ability or collection of related abilities एटा देख मु तुमको एते बुझेली ए पछर सब मु तुमको बुझे के आइलार पेले ता भितर डायरेक्ट आंसर बाहर तमें मत एटा कौन कर रे कमेंट रे जनइब जेतिकी बीड पिला सब जी क्लास देखियो सब कमेंट रे मत आंसरटा जनइब तापर बुझा आस इम्पोर्टाट टीचिंग डेफिनेशन जमी मुझे MK गांधी नेल्सन मांडेला कहली सेगुड़ा तो पूरा मन रखियो एगुड़ा टिके टिके देखिदे जाइथिबो कना HC मोरिसन पचार दूची जैक्सन बेले बेले पचार दूची बुझल ना रे आस देखा HC मोरिसन कौन कहते टीचिंग इज ए इंटीमेट कंटाक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड लेस मैच्योर वन देख मु बर्तमान तुमको पाठ पढ़ाऊँगी
ତାଙ୍କର ଏସି ମୋରିସନ୍ କହିଥିଲେ ଦେଖ ଯିଏ ଟିଚର ତାର କ'ଣ ରେ ମ୍ୟାଚୁଅର୍ ସିଏ ଅଧିକା ନିହାତି ମୁଁ ତୁମଠୁ ଅଧିକା ଦିନ ପଢ଼ିଛି ଅଧିକା ଜିନିଷ ଜାଣିଛି ଅଧିକା କ'ଣ କରିଛି ରେ ସବୁ ମୁଁ ତୁମଠୁ ଅଧିକା ଜାଣିଛି ଦେଖିଛି କ୍ଲାସ୍ କରିଛି କେଉଁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛି ଯାହା ବି ହଉ ତୁମେ କ'ଣ ଟିକେ ଲେସ୍ ମ୍ୟାଚୁଅର୍ ସେମିତି ନୁହେଁ କି ତୁମେ ପୁରା ମ୍ୟାଚୁଅର୍ ତୁମେ ଟିକେ ଲେସ୍ ମ୍ୟାଚୁଅର୍ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମୋଠୁ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ଇଏ କହିଥିଲେ ଏଚ୍ ମୋରିସନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ରେ ଟିଚିଂ ଇଜ୍ ଏ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର ତୁମେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟ୍ରିକ୍ କହିଦେଉଛି ତୁମେ ୟା ଭିତରୁ ସବୁ ପୁରା ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମେ ଏତିକି ମନେ ରଖିଦେବ ଖାଲି ଏଚ୍ ମୋରିସନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲା ରେ ମୋର୍ ମ୍ୟାଚୁଅର୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଲେଜ୍ ମ୍ୟାଚୁଅର୍ କତରୁ ଶିଖିବ କ'ଣ ମୋର୍ ମ୍ୟାଚୁଅର୍ ପର୍ସନାଲିଟିଟା ଲେଜ୍ କ'ଣ ମ୍ୟାଚୁଅର୍ ୱାନ୍ କତରୁ ଶିଖିବ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ଙ୍କର କ'ଣ ମନେ ରଖିଦେବ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ କହିଥିଲେ ଟିଚିଂଟା କ'ଣ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ପର୍ସନ୍ ଯେମିତି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେବ ଧର ତୁମର ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ତୁମେ 50 ଜଣ ପିଲା ବସିଛ ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାହେବରେ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ହୁମ୍ ଟିଚର କ'ଣ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଇଫେକ୍ଟ ସର୍ଟନ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଅଦର ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିଚର କରେ ଛୋଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିକି କ୍ଲାସ୍ କରେଇବେ ତାପରେ ଦେଖ ହୋଗ୍ ଆଣ୍ଡ କିଏ କହିଥିଲେ ଡୁକାନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଟିଚିଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ୱିଥ୍ 4 ଫେଜେସ୍ ଏ କରିକୁଲମ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଫେଜ୍ ଆନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ କ'ଣ ଇଭାଲୁଏଟିଂ ଫେଜ୍ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ରେ ହୋଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁକାନ୍ କହିଥିଲେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରଖିବନି ମୋରିସନ୍ର ମନେ ରଖିଦେବ କ'ଣରେ ମୋର୍ ମ୍ୟାଚୁଅର୍ ଲେସ୍ ମ୍ୟାଚୁଅର୍ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ର ମନେ ରଖି କ'ଣ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଆଉ ୟାର ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଗେଙ୍ଗ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଗେଗ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଆଉ କ'ଣ କ୍ଲେର୍କ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବ କ'ଣ ଏଇଟା ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିକି ନୋଟ୍ କରିଦେଇ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରି ଦେଉଛି ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଥର ତାପରେ ବୁଝିବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଆମର କ'ଣ ଟିଚିଂର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଦ ମେଜର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ କଭର୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କ'ଣ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ଟିଚିଂରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କତିରେ ପଢ଼ୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତୁମର ଟିଚିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ବେଟର୍ ହେବ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବ ଭଲ ବୁଝିପାରିବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନସେପ୍ଚୁଆଲ୍ ତୁମର କନସେପ୍ଟରେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ କନସେପ୍ଟରେ ତୁମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ ତୁମର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ତୁମର ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେବରେ ବହୁତ ନଲେଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସ୍କିଲ୍ ତୁମର ଟିଚିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେଇ ଦେବି ବୁଝିପାରୁଛ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ ତୁମର ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ ବଢ଼ିବ ତୁମର କ'ଣ ପରେ ଆଇଡ଼ିଆ ବଢ଼ିବ ତୁମର ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ିବ ତୁମର ନଲେଜ୍ ବଢ଼ିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଟିଚିଂ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ମନେ ରଖିବ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବଢ଼ୁଛି କନସେପ୍ଚୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ୁଛି ତୁମର ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଇନ୍ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ଦେଖ ବଢ଼ୁଛି ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ବିହେଭିଅର୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ବଢ଼ୁଛି ମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ରେ କେମିତି କେଉଁ ଜିନିଷଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ କାହା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ନଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ତାପରେ ଦେଖ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ୁଛି ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ରେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ରେ ପିଲା ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ବଢ଼ୁଛି କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ମେଥୋଡୋଲୋଜିରେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ବଢ଼ୁଛି କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ପିଲା କ'ଣ ବୁଝରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେବ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ପିଲା ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ବାହାରି ପାରୁଛି କିମ୍ବା ପିଲା ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ ପିଲା ସେଠୁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ବାହାରୁଛି ତାର ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟିକେ ସେ କେତେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କେତେ କ୍ରିଟିକାଲି ସେ ଜିନିଷଟା ଭାବି ପାରୁଛି ସେଇଟା କୁହନ୍ତି କ'ଣ କ୍ରିଟିକାଲି ଥିଙ୍କିଂ ପିଲାର ରାଇଟିଂ ବଢ଼ୁଛି ପିଲାର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ବଢ଼ୁଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବ ତୁମେ ସେ ପିଲାଟାକୁ 4 ପ୍ରକାର 5 ପ୍ରକାର ୱେରେ କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଖଟେଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଏରା ସବୁ କ'ଣ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଉ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କ'ଣ ପୁରା ଥିଓରି ଭଳିଆ ଟିଚିଂଟାକୁ ବୁଝିଯିବା ବୁଝିପାରୁଛରେ ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ ପୁରା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝାଉଛି ପୁରା ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ନଲେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ଦେଖ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ତୁମେ ସେଇ ୱେରେ ପଢ଼ାଇବ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ନୁହେଁ କି ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ମ୍ୟାଥ୍ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହେବ ତୁମ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ର ୱେରେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ପଢ଼ାଇବ ତାପରେ କ'ଣ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଏ ସୋସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛ ସୋସିଆଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ମେମ୍ବର କରିଦେଉଛ ସୋସାଇଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟିଚିଂ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ନଲେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟା କ'ଣ ସୋସାଇଟିରେ ଭଲସେ ମିଶି ପାରୁଛି ଗୋଟେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ହୋଇପାରୁଛି କେଉଁଥିରେ ସୋସାଇଟିରେ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ନେଚର୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ
नेचर कौन टीचिंग रो क्यारेक्टरिस्टिक कौन आस देख बुझा टीचिंग इज ए सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस मु कहली ना टीचिंगटा कौन गोटे सोशल तुम सोसाइटी कौ लांगुएज चली तुम सोसाइटी कौ लांगुएज पढ़ा तुम सोसाइटी तुम नेबरहुड सहित कौ लांगुएज कथा हो देख तुम सोसाइटी तुम ओडिया कथबार्ता हो तुमको आनी तेलुगु क्लास पढ़े तुम बुझीपार कि बुझीपार कि टीचिंग इज सोशल तुम सोसाइटी जो लांगुएज चली तुम सोसाइटी नीतिदिन जहाँ चली सहित कनेक्ट करके आम सब पाठटा पढ़ेबा टीचिंग इज ए सोशल एंड कल्चरल तुम जो भाया कल्चर से कल्चर अनुसार कौन प्रोसेसटा चलो व्हिच इज प्लान टू एनाबल एन इंडिविजुअल लर्न कौन समथिंग इन इज लाइफ इंडिविजुअल मो क्लास 50टा पिला अच्छो 50टा पिला केमी बुझ समस्ते केमी इंडिविजुअल न्यूड फिलअप हम तुम्हें बुझ सब केमी क्लास पाठटा बुझ तुम लाइफ में केमी कौन प्लान कर चेंजेस आण डेभलपमेंट कर आज ए टीचर चिंता करी वी कैन डिस्क्राइब नेचर एंड क्यारेक्टरिस्टिक बिलो देख टीचिंग इज ए कंप्लीट सोशल प्रोसेस मुझे बुझेली टीचिंग इज अंडरटेकन फॉर सोसाइटी एंड बाय सोसाइटी विथ एवर कौन चेंजिंग सोशल आइडियाज इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब दैट एक्जाक्ट एंड कौन परमानेंट नेचर ऑफ टीचिंग मुझे कथा कहली तुम सोसाइटी कौ लांगुएज चली तुम सोसाइटी कौन पढ़ुच तुम परिवेश कौ भाया तुम सोसाइटी आगुरी किए पढ़ी कि ना तापर बहुत मैटर करे तब टीचिंग इज गिविंग इनफॉरमेशन सब जानिच टीचिंग कौन ले तुम बर्तमान जो पढ़ुची मुझे तुमको किसी इनफॉरमेशन दूसरी ना नहीं मुझे तुमको किसी पाठ बुझे पार्छ ना नहीं से कौन कहते टीचिंग इज गिविंग इनफॉरमेशन तापर देख टीचिंग इज इंटरैक्टिव प्रोसेस टीचिंगटा कौन इंटरैक्टिव प्रोसेस मु तुमको कहबी तुम मत कह तुम कूड़ा बुझीपार से मत जनइब मुझे तुमको गाइड करी तुम प्रोग्रेस करबी से कथा देख लिखी टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचिंग सोर्स व्हिच इज एसेंशियल फॉर द गाइडेंस प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट मु तुमको गाइड करी केमी तुम डेवलपमेंट हम केमी तुम कौन हम ग्रोथ हम सीटा मुझे चिंता करेबी टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग टीचिंगटा हूँ जो प्रोसेस के कहार प्रोसेस रे डेवलपमेंट हम तुम दिनक दिन तुम मो सहित टीचिंग एटीट्यूड क्लास कर देखो पर डे बेसिस रे तुम केते डेवलपमेंट हो 15-20 दिन जो क्लास हो तुम देखो पे तुम सब क्वेश्चन टीचिंग एटीट्यूड कर ये तुम डेवलपमेंट है तुम किसी जिनस शिखल टीचिंग कजेस ए चेंजेस इन बिहेवियर देख टीचिंग रे कौन हम पाठ पढ़ा द्वारा मुझे तुमको पढ़ाया द्वारा तुम भी निजे देख तुम बिहेवियर कौन चेंजेस आसी जीव टीचिंग इज ए आर्ट आज वेल एज साइंस निहाती टीचिंग इज फेस टू फेस एनकाउंटर टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल मेजरेबल एंड मॉडिफाएबल देख टीचिंग रे ऑब्जर्व करी हबो मु तुमको केते पढ़ाई तुम केते बुझीच मेजर करी हबो मॉडिफाई मध्य करी हबो मॉडिफाई केमिति करी हबो मु आज तुम गोटे क्लास कली तुम सेटा किंतु कल पिले कि बुझी पाइल नाही मुझे करी पुणी मॉडिफाई करके पुणी आउ गोटे क्लास आनिकी तुमको सेटा बुझेई देबी ना कि मु कहबी जे तुम पढ़ुना बुझी पाइल नाही आज ए टीचर मोर कर्तव्य मो पिला बुझी पारना माने मु मॉडिफाई करके जिनसड़ा तुमको पढ़ाई बुझेबी तापर क्वेश्चन देख टीचिंग इज ए स्किल ऑफ ऑक्युपेशन निहाती ऑक्युपेशन कौन टीचिंगटा गोटे स्किल एवरी सक्सेसफुल टीचर इज एक्सपेक्टेड टू नो द जनरल मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन जिते तुम काली जड़े टीचर हम तुम भी जड़े टीचर हम तुम जेहेतु बीड एंट्रांस दबाक आस मैंने तुम खाली गवर्नमेंट बीड पाइब 2 वर्ष पर तुम बीड सर तुम टीचर हम तुम जनरल मेथड जाना दरकार केमी आज तुम टीचर पढ़ेब टीचिंग फैसिलिटेड लर्निंग टीचिंगटा कौन लर्निंग फैसिलिटेट करे टीचिंग इज बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस देख टीचिंगटा खाली नुहे कि तुम क्लास रे बसिकी ड्रेस पिंधिकी आसब बहीपत्र धरिकी आसिक शिख बोली तुम बाहर भी जेकोसी जगह तुम बस स्टाण्ड जाऊच तुम देखिले गोटे टैपटे भांगिकी पानी बाहरी जाऊँगी तुम कौन कल जाकि से पानीटा को बंद करदेल सेटा भी कौन तुम गोटे जिनसटे शिखिल कि नहीं पानी बाहर तुम बंद करदेल पानी नष्ट कल ना वाटर तुम कौन कल बंचेल सेटा कौन अनकॉन्शियस प्रोसेस कहते ये जो जिनसा शिखिल तुम बस स्टाण्ड रे कहते अनकॉन्शियस प्रोसेस किंतु जो तुम क्लासरूम में शिखुच कौन कहते कॉन्शियस प्रोसेस तापर देख टीचिंग इज फॉर्म मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल मेमोरी लेवल माने खाली घोषाटा कौन टोटाल तुम मुंडा भाया बही दिज्व तुम खाली घोषिब कहते मेमोरी लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल कौन तुम चिंता कर रिफ्लेक्ट कर तुम गोटे जिनस दिया तुम चिंता कर गोटे रिफ्लेक्ट करके आइडियाटे दब से कहते कौन रिफ्लेक्टिव लेवल सब एवं लेवल तौक अच्छी मेमोरी लेवल अंडरस्टांडिंग लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल पर वर्ष क्वेश्चन पचारुची काली जो मुझे 2023 देखो करी टीचिंग एप्टीट्यूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखो आम अंडरस्टांडिंग लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल क्वेश्चन पचारि टीचिंग इज ए कंटिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग टीचिंगटा कंटिन्यूअसली चलो तुमको ट्रेनिंग मिली जीव गोटे कंडीशन रोचे आमर कंडीशन कौन अच्छी रे आम बीएड एंट्रांस केमी क्लीयर करवा से तुमको पढ़ाऊँ तुम मैंने कौन पढ़ुच कौन टीचिंग इज कंडीशनिंग इंस्ट्रक्शन सब जान मुझे तुमको जहाँ इंस्ट्रक्शन देवी तुम मानी जीव आ कौन रे
ଡିକ୍ସନେସନ୍ କ'ଣ ରେ ଇଣ୍ଟର କ'ଣ କ'ଣ ଇଣ୍ଡୋକ୍ରିଟିନେସନ୍ କ'ଣ ଇଣ୍ଡୋକ୍ରିଟିନେସନ୍ କ'ଣ ଯେମିତି ଟିଚିଂରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ବୁଝଉଛି କହୁଛି କ୍ଲାସ୍ରେ ତାର କ'ଣ ଲେ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ଇଣ୍ଡୋକ୍ରିଟିନେସନ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଟିଚିଂ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ କେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଏମ୍ସ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ and has broader scope with the vast curriculum while on other hand condition is the modification of behavior and learning habits। condition କ'ଣ କରିକୁଲମ୍ ଇଜ୍ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡନ୍ ବାଇ ଦ ରିପିଟେଡ୍ ବିହେଭିଅର୍। ଦେଖ କଣ୍ଡିସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା ଗୋଟେ କରିକୁଲମ୍ଟା ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା ରିପିଟେଟିଭ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଦେଖ ଦେଖ ଛୋଟ ଛୁଆ ବେଳେ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥାଏ ତୁମେ ଲେଖିବ ଡାକିବ ଲେଖିବ ଡାକିବ ତୁମେ ଲେଖ ଡାକ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ରିପିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର୍। କଣ୍ଡିସନିଂରେ କ'ଣ ହୁଏ ରିପିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର୍ଟା ଦେଖାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲ। ଟିଚିଂ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ରେନିଂ କେମିତି ବୁଝ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚିଂ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଥିଓରିଟିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜୁଆଲି ରେଫର୍ସ ଟୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇଜ୍ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍। ଟ୍ରେନିଂଟା କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କିନ୍ତୁ ଟିଚିଂଟା କ'ଣରେ ଗୋଟେ ଥିଓରିଟିକାଲ୍ ହୁଏ ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଟିଚିଂ ଏଇଟା କ'ଣରେ ଟ୍ରେନିଂ ନୁହଁ। ଯେମିତି କ'ଣ ଟିଚିଂ ତୁମେ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ଟିଚର୍ମାନେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ବୁଝା ହେବ କେମିତି ତୁମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ। ତାପରେ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିଚିଂଟା ଅଲଗା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଅଲଗା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ଟା ଦେବା ଅଲଗା ଏଟା କର ସେଟା କର ବୁଝିପାରୁଛନରେ ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ଦେଖ ଟେଲିଂ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ଡୁ ଅର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ନଟ୍ ଡୁ ବୁଝିଲ ଏଟା ସବୁ କ'ଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ indoctrination are different as indoctrination poses the belief that only one situation to the problem while teaching point of view teaching point of view रे तुम गोटे जो point of view रे solution करूछ ता कोन कहन रे indoctrination किंतु आम सेमिति करबा नाही out that there are different solution often to the same problem गोटे problem पई तुम सबले पिला कोन कहबे केमिति 20 प्रकार वे रे पिला सेटा सॉल्व करि परिबो बहुत वे रे केमि सॉल्व करियो तुम सेटा पिला को सिकेइबो। तापर देखो The overall objective of teaching is built on overall personality देखो learning capability thinking and changes in behavior different level of teaching ये जो लेवल देछि ए लेवल ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पचारुछि गोटे प्रश्न तुमको दउछि ए प्रश्नटा पचारुछि को लेवल ले जाउछि तीनटा लेवल देख मु बुझौछि मेमोरी लेवल हला कोन रे तमे जहा घोषिछ डायरेक्ट घोषिछ देखो कौन एग्जांपल आम देशर प्रधानमंत्री किए पचार ता तले देथिबो एटा को लेवल क्वेश्चन डायरेक्ट तुम मन रखिथिबो नरेंद्र मोदी कहबो नन नाही एटा कौन जबारे मेमोरी लेवल क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग लेवल कौन तुम केते जो जिनसटा बुझीछ जोटा बुझिया भाया क्वेश्चन आसीबो बुझिला लेवल क्वेश्चन आसीबो तुम धर आमको पचारिबो गछरु पत्र झड़ा काईकि हुए कौन रे आमर आम जानिथिबा दरकार गछर पत्र झड़ा काईकि हुए आम से कॉन्सेप्टटा बुझिथिना आम एठी कहि पारिबा ताको कौन कह अंडरस्टैंडिंग लेवल बुझिपाल। डायरेक्ट पचारा आमको कौन ये गछटा ना कौन आम कहले आंब गछ ताने कौन रे सेटा गला मेमोरी लेवल आमको सेठी पचारिबो ए गछर उपकारिता कौन अपकारिता कौन जति आम बुझीथिबा जानिथिबा ए गछटा को भलिया गछ कौन से दउछि आमको फल दउछि ना फूल दउछि ना कौन दउछि बुझीथिबा जानिथिबा अंडरस्टैंडिंग लेवल। किंतु रिफ्लेक्टिव लेवल कौन सब ऊपर लेवल तुमको गोटे सिचुएसन दिया तुम सेठू कौन रे बेटर वे केमी बाहर बेटर जिनस केमी चिंता कर कह आस गोटे गोटे मुझे तुमको सब बुझाऊँगी। प्रथम देख मेमोरी लेवल कौन मेमोरी लेवल टीचिंग एम्फासाइजेस ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड इनफॉरमेशन इट इज ऑल अबाउट कौन क्रामिंग जहाँ तुम जानिच सीटा कौन कर जहाँ तुम घोषिच सीटा डायरेक्ट कहवा कौन मेमोरी लेवल। नॉलेज और इनफॉरमेशन इज गेन्ड बाय द लर्नर थ्रो मेमोराइजेशन डायरेक्ट घोषिच कह डायरेक्ट घोषिच कह मेमोरी लेवल टीचिंग है कौन डायरेक्ट घोषिच कह इट इज इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग एंड इंड्यूस द हैबिट ऑफ रोट लर्निंग ऑफ फैक्ट एंड मैटर एटा इनिशियल जो आम छोट छुआ देखिए फास्ट फास्ट आम पाठ पढ़ा स्टार्ट करते से आम कौन करते सब घोषिकी मन रखती जी तुम पाठ पढ़ मु पाठ पढ़ जो आम फास्ट पाठ पढ़ा स्टार्टिंग करते आम कौन बुझीपारे आम कहते आम घोषुले अख रख सब आम कहते रोट लर्निंग करते घोषुले इट प्रोवाइड स्टूडेंट विथ द एबिलिटी टू रिटेन एंड रिप्रोड्यूस द लर्निंग सब्जेक्ट रिटेन माने मन रखा रिप्रोड्यूस माने बार बार प्रैक्टिस करवा से खाली मन रखाटा कौन हो कहती मेमोरी लेवल इट कवर्स ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आमर जो अच्छी ब्लूम टैक्सोनॉमी मुझे तुमको यहाँ पढ़े पिले दिस इज लेवल द स्टूडेंट लर्न टू आइडेंटिफाई रिकॉल खाली मन रखियो रिमेम्बर ऑब्जेक्ट इवेंट आइडियाज रिटेन दे मीन मेमोरी कौ दिन आमर कौन रे जहाँ हो आमर जेकोसी क्वेश्चन हो जहाँ तुम खाली डायरेक्ट मन रखियो सेगुड़ा आमर कौन कहते रे मेमोरी लेवल आउ कि ना तुम देख गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आमर पड़ा ये 2023 मुझे तुमको देखी से क्वेश्चनटा देख आमर कौन रे
मेमोरी लेवल हो अंडरस्टैंड लेवल कौड़ा क्वेश्चन पचारूँ द टीचर प्लेज एन भेरी डोमिनेटिंग एंड अथॉरिटेरियन रोल व्हाइल इंस्ट्रक्टिंग टीचर कौन कर टीचर डोमिनेंट रोल कर जो मेमोरी लेवल टीचर जहाँ कहे टीचर रथॉरिटी पिला कौन रे खाली शुणे टीचर डोमिनेंट रोल टीचर जहाँ कहे पिला खाली बसिकी शुणे आस देख मुझे तुमको देखो जो लेवल जो आम जो देखिक आइले जो कौन डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल प्रीवियस गोटे क्वेश्चन पचार देख मुझे तुमको देखा ये देखर पिले मुझे तुमको एवं पढ़े कि आइली जो कौन आम सब लेवल ऑफ टीचिंग अंडरस्टैंडिंग मेमोरी लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल देख गोटे क्वेश्चन पचार 2023 ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन इन ए क्लास गोटे क्लासरूम रे प्रेजेंटेशन दौच ए टीचर गिव्स ए लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल टीचर कौन देले पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल देले आमको कौन देले रे टीचर आमको पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल देले देले हुईच लेवल ऑफ लर्निंग रे इटा जीव रिफ्लेक्टिव लेवल ना अंडरस्टैंडिंग लेवल ना मेमोरी लेवल देखो ये किसी घोषिया कथा मुझे कहनी टीचर आम कौन बहुत जिन पॉजिटिव जिन नेगेटिव आमको एग्जांपल देले जब से पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल गुड़ आम बुझीपर कौन जी आम माइंड रे बुझीपर आम से बुझाटा आम कौन कहते कौ लेवल जी आम अंडरस्टैंडिंग लेवल बुझिपाल से आंसर कौन है 97 ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग लेवल जब डायरेक्ट घोषिब मेमोरी लेवल जब बुझीगल से कौन अंडरस्टैंडिंग लेवल देख ना केमी डायरेक्ट क्वेश्चन पचारुची आस पुणी जा थ्योरी बुझा आम मेमोरी लेवल बुझाई एस जा अंडरस्टैंडिंग लेवल बुझा तापर देख मेमोरी लेवल कौन पे बुझल रे डायरेक्ट तो मन रख डायरेक्ट गोटे क्वेश्चन आसो डायरेक्ट तुम मन रखिथ घोषिथ कहीपर न ना कौन कहते मेमोरी लेवल देखो मेमोरी लेवल के टाइप देती देखी दियो इमिडिएट मेमोरी व्हेन ए रिकॉल इज इमिडिएट सांगे सांगे गोटे कथा शुणल मन रखिल कहते इमिडिएट मेमोरी परमानेंट मेमोरी देख द रिकॉलिंग ऑफ मेटेरियल फॉर लॉन्गर टाइम गोटे जिन को बहुत टाइम मन रखा कौन कहते परमानेंट मेमोरी पर्सनाल मेमोरी कौन व्हाइल रिकॉलिंग द एक्सपीरियंस वी रिमेंबर आवर पर्सनाल एक्सपीरियंस तुम निजे निजे गोटे पर्सनाल एक्सपीरियंस करूल तुम गोटे से जिनसा तुम सहित घटला तुम से जिनसा मन रखा कौन कहते पर्सनाल मेमोरी इम्पर्सनाल मेमोरी कौन रिकॉलिंग फ्रॉम बुक आउ कंपेनियन तुम अलग को जगह पढ़ल बुझी पढ़ी कौन कल मन रखिल इम्पर्सनाल जो तुम निज सहित घटला से जिनसा तुम मन रहा पर्सनाल मेमोरी एक्टिव मेमोरी कर तुम एफर्ट लगेल मेक एफर्ट टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंसेस रिकॉलिंग आंसर इन एग्जाम तुम कौन एग्जाम पढ़ी मन रखिल आंसर सब कौन रे एफर्ट लगे कौन एक्टिव मेमोरी पासिव मेमोरी कौन तुम आउ क्या पाखर शुणी मन रखा कौन कहते पासिव मेमोरी तापर मेकानिकल मेमोरी कौन बॉडी बिकमिंग हैबिचुअल ऑफ डूइंग एनी टैक्स रिपीटेडली तुम गोटे जिन को बार 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 करुच तुम डेली गल क्रिकेट खेल प्रैक्टिस कर से कौन रे से आपे आप तुम कौन मन रही जीव रोट मेमोरी कौन क्रामिंग फैक्ट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग किसी बुझे मुंडा भाया खाली घोष चलो कौन कहते रोट मेमोरी लॉजिकल मेमोरी कौन टू लर्न समथिंग बाय यूजिंग इंटेलेक्ट एंड इट रिकॉलिंग व्हेन नीडेड तुम कौन गोटे मुंडर बुद्धि खटई तुम गोटे जिन गोटे आइडिया कर मन रखने कौन हम से टू लर्न समथिंग बाय यूजिंग इंटेलेक्ट तुम इंटेलेक्ट मैंने कौन बोले ब्रेन ब्रेन आइडिया खटई तुम मन रख कौन हम जो तुम दरकार हम तुम पुणी रिकल कर पार तापर देख आसगला आम अंडरस्टैंडिंग लेवल जोटा मुझे तुम बुझेली जो क्वेश्चन देखे अंडरस्टैंडिंग लेवल ही पड़ता मेमोरी लेवल टीचिंग इज प्री रिक्विसाइट फॉर द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग तुम अंडरस्टैंडिंग लेवल तुम आगे मेमोरी लेवलटा निहाती दरकार तो मेमोरी लेवल जब किसी जिन बुझी पे तुम अंडरस्टैंडिंग लेवल से बहुत हेल्प कर आज इट टॉक अबाउट द जेनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल थ्योरी एंड अदर की इंपोर्टेंट फैक्ट्स तुम मेमोरी लेवलटा कौन प्री रिक्विसाइट तुमको कौन अंडरस्टैंडिंग लेवल तुमको कौन हेल्प कर किए तुम पूर्व मेमोरी लेवलटा तापर देख दिस हेल्प टू बिल्ड द थिंकिंग लेवल तुम चिंता करवा लेवल बढ़ो ऑफ स्टूडेंट टू मेक यूज देयर एक्वायर नॉलेज बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज और फैक्ट तुम पछरू जो जिनिस जानिच पछरू जो जिनिस बुझीच ता ऊपर कौन हम तुम नॉलेजटा डेभलपमेंट हम तुम नॉलेजटा कौन हम पे गेन हम तापर देख कौन कही द टीचर एक्सप्लेन्स द स्टूडेंट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स एंड टीच देम हाउ दिज प्रिंसिपल कैन बी आप्लाइड देख केमी से जो तुम जो जिनसा बुझिल से जिनसा केमी तुम आप्लाय हम तुम केमी से सब्जेक्ट रे मास्टरी कर देख लिखी तले इट फोकसेस ऑन मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट तुम देख तुम बर्तमान मुझे टीचिंग एटीट्यूड जोड़ा बर्तमान मेमोरी लेवल अंडरस्टैंड लेवल जहाँ जहाँ सब पछरू बुझे आसिली तुम जब गोटा बुझीज तुम या मास्टरी हो ना नहीं समस्ते कुरे तापरे इट प्रोवाइड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट डेभलप स्किल पिला कौन करेंगे मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी दब पिला कौन करेंगे से जिते अपॉर्चुनिटी दब पिला कौन हम से पिला कौन करेंगे
ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ମେମୋରି ପ୍ଲସ୍ ଇନସାଇଟ୍, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବେ, ବୁଝିବେ। ଦ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଲେବୁଲ୍ ଇଜ୍ ମେନଲି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଆମର ୟାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟା କରାଯିବ ମେନଲି କେମିତିରେ, MCQ ଟାଇପ୍ର କରାଯିବ, ବୁଝିଲ ନା। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ମାନେ କ'ଣ, MCQ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ରହିବ, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁ କ'ଣ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ରହିବ। ଦ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ମେନଲି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସେ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ବି ରହିପାରିବ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ରେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଛ କହିବ, ଏସେ ଟାଇପ୍ ତୁମକୁ ଦିଆହେବ କ'ଣ ଦିଆହେବ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦିଆହେବ। ଆମର କ'ଣ ମେମୋରି ଲେବୁଲ୍ରେ ବୁଝିଲ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚରା ହେବ ତୁମକୁ ଏଇ ଗଛଟା ନାଁ କୁହ, ତୁମେ ଲେଖିଦେଲ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପଚରା ହେବ ଯଦି ତୁମେ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କ'ଣ ହେଲ୍ପ ହେଉଛି, ତୁମର କ'ଣ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି, ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ, ତାପରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଏସେ ଲେଖିକି ଦିଅ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଲେଖିକି ଦିଅ। ସେଠି କ'ଣ ତୁମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେବୁଲ୍ର କାମ ଆସିବ। ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଛ ସେରା ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲେଖିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ମେମୋରି ଲେବୁଲ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମେ ଯାହା ମନେ ରଖିଛ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେବୁଲ୍ରେ ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିଛ। Student and teacher both play an active role in the understanding level of teaching. Understanding level ରେ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିଚର ବୋଥ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍। ଟିଚର ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ସବୁ ମିଶିବେ। ଏଇଟା କାହିଁ ବୁଝି ହେଲାନି, ସେଠି ସେଟା ଟିଚର ବୁଝେଇବେ, ଛୁଆକୁ ବୁଝିପାରୁନି ପଚାରିବ ସେଠି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିକି ଆଇଲେ ମେମୋରି ଲେବୁଲ୍ରେ କ'ଣ କହିଥିଲା, ଟିଚର ଡୋମିନାଣ୍ଟ, ଟିଚର ଯାହା କହିବ ସେଇଆ କେଉଁଠି ମେମୋରି ଲେବୁଲ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେବୁଲ୍ରେ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବେ। ପିଲା ଯଦି ବୁଝିପାରିବେନି ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ପିଲାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ପିଲାଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ସେ ଟିଚରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି କ'ଣ କରିବେ, ପାଠଟା ବୁଝିକି ପୁରା କନସେପ୍ଟଟାକୁ କ୍ଲିଅର କରିବେ, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ମୋରିସନ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ମୋରିସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେବୁଲ୍ଟାକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜ୍, ପଛ ନଲେଜ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଆନାଲାଇସିସ୍ କରିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟର। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କ'ଣରେ, କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ତାର କ'ଣ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା, ତାକୁ ଭଲ ଦିଆହେଇଛି ଖରାପ ଦିଆହେଇଛି ପିଲାଙ୍କୁ କରିବା, ପିଲା ବୁଝୁଛି ନ ବୁଝୁଛି ଚେକ୍ କରିବା। ଆସିମିଲେସନ୍ କ'ଣରେ ପିଲେ, ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ସବୁ ପିଲାଙ୍କର, ମୋ କ୍ଲାସ୍ରେ 20ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 20ଟା ପିଲାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିକି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି। ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ୱାର୍କ କରେଇମି, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ୱାର୍କ କରେଇମି, ଟେଷ୍ଟ କରେଇମି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଆସିମିଲେସନ୍। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କ'ଣରେ, ପିପଲ୍ ଆର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଅକେଜନ୍ ଫର୍ ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅକେଜନ୍ ଦିଆହେବ, ଯେଉଁଠି କ'ଣ କରିବେ, ପିଲାମାନେ ଆଣିକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ। ରିସାଇଟେସନ୍ କ'ଣ, ପିପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓରାଲି। ପିଲା ଓରାଲି କ'ଣ କରିବେ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ, କ'ଣ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେବୁଲ୍ରେ କେତେ ବୁଝିଛନ୍ତି, କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଓରାଲି ସେଟାକୁ କ'ଣ ଟିଚରଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବୁଝେଇବେ। ତାପରେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, RLT। ଯଦି ଆମକୁ RLT ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିଦେବ କ'ଣ ଲେଖିବରେ, ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ। ଦେଖ ଏଇଟା ବୁଝ ପୁରା। ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ଅନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ଗିଭିଂ କେୟାରଫୁଲି ଥଟ୍ ଟୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଓଭର ସମ୍ ଟାଇମ୍। ମୁଁ କହିଲି ନା ରେ, ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଉପର ଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ମେମୋରି ଲେବୁଲ୍ ଘୋଷିଲ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେବୁଲ୍ରେ ତୁମେ ବୁଝିଲ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଥିଙ୍କିଂ ଡିପ୍ଲି ଏବାଉଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ତୁମେ ଡିପ୍ଲି ଭାବିବ, ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶିକି ଚିନ୍ତା କରିବ, ପୁରା କ'ଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ର ପୁରା କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ରେ, ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲେବଲ୍। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଇଟ୍ ଟକ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ବୋଥ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେବଲ୍, ମେମୋରି ଲେବଲ୍ ଟିଚିଂ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଣ୍ଟର। ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂଟା, ଏଇଟା ବଡ଼ଟା, ସବୁ ଜିନିଷ ଆ ଭିତରେ ପଳେଇବ। ଆମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେବଲ୍, ମେମୋରି ଲେବଲ୍ ଦୁଇଟାଙ୍କ ୟା ଭିତରେ ଯିବ। ଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଣ୍ଟର, ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟେ ଆସିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟେ ହଠାତ୍ କିନା କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ତୁମେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ, ତୁମ ଆଇଡ଼ିଆ ଖଟେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ସେଇଟା କ'ଣ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଲେବଲ୍ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଇଟ୍ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଆଇଡ଼ିଆଟା ପିଲାର କେତେ ବଢ଼ୁଛି, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅରିଜିନାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ପିଲାଟାର ଅରିଜିନାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ କହିଲେ ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମେ ଏଇଠି ବସିଛ, ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ଯିଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲେବଲ୍ର ଟିଚିଂ ଥିବ, ଯିଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲେବଲ୍ର ଟିଚର ଥିବ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଠାତ୍ କି ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆଇଡ଼ିଆ ଖଟେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବ ରେ, ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସଲ୍ଭ କରାଇଦେବ। ପିଲାଙ୍କୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି। ବସିଛ, ହଠାତ୍ କିନା ତୁମର ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁର୍ ହେଇଛି ସେଇ ଲେବୁଲ୍ର, ତୁମେ ସେଇ ଲେବୁଲ୍ର ଭାବିପାରୁଛ, ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରୁଛ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିବ। ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଲେବଲ୍ ଦ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଲେଡ୍ ଅନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଡିଫାଇନିଂ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଲେ, ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆବିଲିଟି ଡେଭଲପ୍ଡ ଦିସ୍ ଲେବଲ୍। କାହିଁକିନା ପିଲାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ତୁମେ ତ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେବୁଲ୍ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲ, ପିଲା ସେଇଟା ବୁଝିଲା, ତୁମେ ମେମୋରି ଲେବୁଲ୍ରେ ପିଲାକୁ ଘୋଷେଇଲ, ପିଲା ସେଇଟା ଘୋଷିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କିନା କ'ଣ ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଆସିବ, ସିଚୁଏସନ୍ଟା ପିଲାଟା ଆଗରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ପିଲା କ'ଣ କରିବ ରେ, ନିଜେ ତାର ଥିଙ୍କିଂ, ତାର କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ତାର ଆବିଲିଟି ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ରେ, ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଛ, ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ପିଲାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲା ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଖଟେଇକି, ବ୍ରେନ୍ ଖଟେଇକି ସେ ଜିନିଷଟା କରିପାରିବ।
ए स्टूडेंट इज कौन कोर एक्टिविटी एंड प्राइमरी विल टीचर बिकम सेकेंडरी एंड पासिव बुझिपाल स्टूडेंट सब कौन रही ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल एक्टिव एंड प्राइमरी प्रथम ध्यान क्या स्टूडेंट को टीचर कौन रही सेकेंडरी और पासिव तापर देख ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग रे जो RLT हंट मेन पोपनेट देख ULT MLT देख ये किसी ना रिप्ले जो मुझे तुम सब बुझेदेली द क्लासरूम एनवायरनमेंट टू बी सफिशिएंट ओपन एंड इंडिपेंडेंट एसे टाइप टेस्ट इज यूज टू इवैल्यूएट लर्निंग प्रोसेस ए लर्निंग प्रोसेस एसे टाइप क्वेश्चन दिया तुमको हठात कि तुम क्लास रे बसीच सार आसवे तुमको कह गोटे कोविड पैंडेमिक गोटे एसेटा लेख केते पिलाटा कोविड पैंडेमिक बुझी केते पिलाटा कोविड पैंडेमिक ऊपर आइडिया खटाई गोटे लिखियो गोटे एसेटे ये कौन रे इभ्यालुएसन एसे टाइप रे हमर हुए बुझीपाइल आशा करुँच क्लासटी बहुत भल लगी संपूर्ण भाव में पे मुझे ओडिया तुमको बुझे आम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा तुम देखो ये जो ओडिया मुझे जिनसा तुमको बुझे आम क्वेश्चन पढ़दे ओडिया बुझीदे ऑप्शन गुड़िया पढ़ले ओडिया बुझीदे आम कर बहुत एग्जाम हेल्प कर बुझे आपण मैंने जो चैनल प्रथम थर वीडियो देखते चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को लाइक करूँ सांग भर शेयर करूँ रही पुणी देखा काली आमर आज BEd एंट्रांस टीचिंग क्लास 1 काली क्लास 2 रही जय जगन्नाथ।